Okay, guys, let's concentrate over here. Let's start today's session. Today, the day before yesterday, we discussed about the workflow, right? And today we are basically going to discuss about the process builder. Okay, so what is workflow? Workflow is a automation. Okay, जो business automations के लिए हम लोग use करते हैं, and we discuss about this diagram, this complete workflow. Under which we can see we are going to perform automated operation like assign a task, send email, update a field, and compound message. Now let's move ahead and let's talk about the another automation process called process builder. Now in process builder, user is there and user is actually going to perform some operation in your Salesforce app. This operation is considered as a transaction by the Salesforce, and these transactions is going to be treated as an event by the Salesforce server. So what kind of events are going to be happen over here? So basically, it here you can see when the record is changes, then that particular operation is considered as an event by the Salesforce server. In record changes, we are able to create or edit. So one of the operation you have performed, then that considered to be an event. Other platform event message is received. If if you got any error message, then that error message is also considered as an event in this particular process builder. And the third one is invoked by another process. If one of the process is invoked by another process, then that situation we consider this operation is nothing but the event. Now this event is based on some criteria or rules. Okay, whenever this event occur, we need to check a rule, and this rule is of two type. One is sorry, is of three type basically. One is criteria based. So we are actually going to assign a criteria. This criteria not this criteria can be assigned in a multiple ways. Okay, so we can assign multiple criteria on a same rule. So these multiple criteria is now going to be connect either with the and operation or the or operation. So criteria, multiple criteria are going to be set as a rule, and this multiple criteria is going to connect with the and or. Second आता है formula base. This formula base is we know we already discussed about criteria base and formula base in workflow. Same kind of operations is going to be performed over here. Formula based rules are to be defined over here. The formula getted executed, and on the basis of that, if the formula execution gives me a true value, then this rule is going to be executed. Formula gives me a false value, then this rule is not going to be executed. And the third, execute the action. If you want to perform any action to be executed, then that action is also considered as a rule over here. So user perform a transaction that need to be considered as an event, and that event is of three types. This event will occur. Then we are going to check a specific rule. The rule is based on criteria, formula, and execution action. Criteria, we can define multiple criteria over here, and these multiple criteria basically connect with the help of this and or. Now, if this particular rule gives me a true value, right? तो मैंने कल ही बोला था आपको ट्रू वैल्यू कब मिलती है वर्कफ्लो के अंदर फॉल्स से ट्रू में जाता है तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना रिकॉर्ड चेंजेस वेदर द वैल्यूज इनिशियली ट्रू वापस ट्रू हो गई फिर भी यहाँ पे रूल्स क्राइटेरिया मीट करेंगे और क्राइटेरिया मीट करने के बाद में एक्शन परफॉर्म होगा राइट सो ट्रू ट्रू अलाउड है फॉल्स ट्रू अलाउड है फॉल्स फॉल्स अलाउड नहीं है एंड ट्रू फॉल्स अलाउड नहीं है अदरवाइज ट्रू ट्रू अलाउड है एंड फॉल्स से ट्रू में अलाउड है if the condition is true, if this rule is giving me an answer true, then we are going to perform some action. And we know that action is of two types. One is immediate action, another is time-based action. We already discussed about this in detail. What is mean by immediate action? The action which is taken place immediately. The after event occur, immediate अगर
एक्शन है तो हम लोग इमीडिएट एक्शन डिफाइन करेंगे। एंड टाइम बेस्ड, जैसे मैंने बोला था कि इफ यू बुक अ मूवी टिकट एंड यू गो एंड वॉच अ मूवी, एंड फिर आप लोग जब मूवी देख के बाहर निकलते हो, देन यू गेट अ link for the feedback. Okay, so feedback link is scheduled after the movie show finishes. Okay, so you can define this action on a time base or schedule base. Whenever you define this action on a schedule base, these are once again divided into two parts. Either you perform before a particular time and after a particular time. So you know that before few days and before few hours, as well as before after few days or after few hours, ये आप conditions यहाँ पे specified कर सकते हैं for the time base. And we know that now this immediate and time based action, तो ये कौन से एक्शन हमारा प्रोसेस बिल्डर हम लोगों को अवेलेबल करवा के देगा, या फिर कौन से ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे. सो द लिस्ट इज गोइंग ऑन. द फर्स्ट वन इज एपेक्स. You are supposed to execute any Apex class by using this process builder. The next one is create a record. You can suppose to create a new record automatically under this action by this process builder. Then आता है assign a task. Last time हमने देखा था how to assign a task in a workflow. Same kind of task if you want to assign, then you can assign the such kind of task by using a process builder. Process builder also. Then we have quick action. If you want to perform any quick action, then you can suppose to write this quick action over here. हम लोग देखेंगे इसको भी कैसे करना है. Then we have send email. Then we have update records. We can also able to update a record. Not only update a record, we also able to create a record. Then we have send a notification. If you want to send a notification to a particular user, then you can perform such kind of operation under the process builder. Then you have post chatter. If you want to add something into my chatter, then you can also add. Then we have quip. Quip is basically for the integration purpose. तो वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, but you need to understand quip is basically for the integration purpose. And then we have flow, process and submit approval. So इस प्रोसेस बिल्डर के अंदर हम फ्लो वर्क फ्लो हमारा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. इस प्रोसेस बिल्डर के अंदर हम लोग दूसरा प्रोसेस बिल्डर ऐड करना चाहते हैं एज एन एक्शन तो भी हम लोग कर सकते हैं. और इस प्रोसेस बिल्डर के अंदर अप्रूवल प्रोसेस अगर हमको कॉल करना है तो भी हम वो कॉल कर सकते हैं. सो दीज आर दी actions which are taken by the process builder. Now let's go and quickly understand how to create a process builder, how to assign an event and how to set a rule, how to set the action और फिर वो action कैसे automatically perform होती है. Let's go to your developer console. In your developer console, now go to your setup. Setup में जाने के बाद में search for the process builder. Under the heading of process automation, you will find the process builder. Let's click on process builder to open this. Once you click on process builder, one window will pop up or one window will open, and over which you are supposed to create the your process builder. So what I'm going to do now, let the thing is open and then we will discuss further. Now you can see this is the page where you can set your process builder. So you can see the welcome message over here. You can see we need to select an object. तो सारी चीजें given है कि क्या क्या प्रोसीजर हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा. Now let's click on new. Here we have a new button with us. So to create a process, we need to click on new to create a new process builder. So once you click on process builder or new button, then it will ask you about whether you want to go with a flow builder or a process builder. As I say, flow builder is a new feature and process builder is a old features. तो basically flow builder ये process builder को overcome करेगा अभी कुछ दिनों में. बट पुराने कुछ चीजें हैं जो फ्लो बिल्डर में नोटिंग करके रखे हैं लोगों के, और वो लोग फ्लो बिल्डर पे ही उनका ऑटोमेशन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस
सॉरी, वो सारे पुराने लोग प्रोसेस बिल्डर पे काम कर रहे हैं और इसी वजह से प्रोसेस बिल्डर का ऑप्शन राइट नाउ हमारे पास में अवेलेबल है, सो वी कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस बिल्डर. Now, once you go there, let me resize this. Okay, now, once you click on that, you are now supposed to create the new process builder. So for that, you have to specify the name for this process builder. Let's say PB1. PB stand for process builder. API name will automatically been getted from the process name. Write down any description if you want to mention over here. Otherwise, keep as it is. Then the process start when. So you need to define the event. कौन सा event होगा तब आप ये सारे चीजें perform होंगे. So I would say a record changes. So in my diagram you can see we have three type of events: record change, uh, platform event message received, and invoke another process. If you go there, uh, then you can see all these three options are there. So I'm going to choose the first option. Whenever the record changes, I'm going to call this process builder and perform some automated operations. So let's click on save to create this particular process builder. Once you click on the process builder, you can see this is the process builder model. In this process builder model, you can see we have a start over here, then we have add object, and all the flow is there. तो ये थोड़ा सा समझने के लिए भी इजी, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी है कंपेयर टू वर्क फ्लो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट प्रोसेस बिल्डर इज क्वाइट इजी कंपेयर टू प्रोसेस बिल्डर वर्क कंपेयर टू वर्क फ्लो, सॉरी. Now you can see we are able to start the process builder. Once the process builder start, you need to select an object. On which object record change होने के बाद में ये process builder work करेगा. So I need to choose an object. So to choose an object, we have this plus button over here and add object link. So you need to click on add object and you need to find the object. So let's say course. I'm going to search for my course object. So I choose a course और इसके नीचे start the process only when record created or when record created and edited. So I am going to basically go with the second option called when record is created or edited. You have an advanced setting over here. If you want to perform it recursively, you can select this. Otherwise, no need to select this. Now I'm going to click on save to add my object into my process builder. Now you can see when we start, it will check the event on a course object, which event create and edit a record or record creation. ये यहाँ पे check किया जाएगा. Then once the record edit or created, we need to specify some criteria. Now you can see this immediate action is grayed out, but ये जो criteria ये enable हो गया है. Now once we add the criteria, then we are supposed to add the immediate action. क्लियर. तो तब तक हम इमीडिएट एक्शन ऐड नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऐड एन क्राइटेरिया. So what I'm going to do, I am going to do now, I'm going to add the criteria over here. So and to add the criteria, I'm going to click on this link. Once I click on this kind of window will open over here. You should write the criteria name. Let's say CR or criteria. So I would say CR से ज़्यादा I say course. I would say course name. मैंने एक नाम दे दिया क्राइटेरिया को कोर्स नेम. Now we know that in my diagram we already discussed that rule is of three type, either a criteria based, formula based or execution. So यहाँ पे आप देख सकते हो the criteria will execute based on this three condition mates, formula evaluates or criteria. You can go with the conditions or you can go with the formula or you can go with the what we call no criteria. So you can directly execute the action. यहाँ पे criteria check ही नहीं करने का, बस record change हो गया, direct action perform करने का, ये भी आप कर सकते हो. Now either I need to choose these conditions are met or I choose the formula evaluated or I can choose this third option also.
So let me choose the second option called formula. Once I click on the formula, you can see the formula editor is now available. So what I'm going to do now, I'm going to search for the function. So I'm going to search for the function. What I'm going to do, I'm going to search for the function. So यहाँ पे जैसे जाएंगे तो फिल्टर में टेक्स्ट लिख के आएगा. So I'm going to choose a text. और यहाँ पे फिर तो I'm going to choose कि टेक्स्ट पे हम लोग कौन सा फंक्शन अप्लाई कर सकते हो. तो दिस इज द लिस्ट. इसमें से कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. आई वुड चूज बिगिंस. तो मैंने बिगिन वाला फंक्शन दिया. नाउ आई गॉट द फंक्शन बिगिंस. सो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट देना पड़ेगा और उस टेक्स्ट को कंपेयर करना पड़ेगा. इफ दैट टेक्स्ट begins with this particular text, तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू चूज द फील्ड इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट. तो पहला आर्गुमेंट मेरा जाएगा फील्ड. सो फील्ड पे सर्च पे क्लिक करेंगे. जस्ट क्लिक ऑन दिस सर्च. नाउ यू हैव चूज द कोर्स ऑब्जेक्ट. तो इसीलिए कोर्स ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट जितने भी फील्ड्स होगी वो यहाँ पे आएगी. So what I'm going to choose now, I'm going to choose course name from here, and I will select so cancel. Now you can see the course name. Okay, course name is there. 2-3 बार हो गया शायद. Let me remove this क्योंकि 2-3 बार इसमें ऐड हो गया वो. And once again, what I'm going to do, I'm going to search for the course name and simply choose this. Now the course name is added over here. So हम लोग formula क्या set कर रहे हैं, that the course name begin with, I would say, A. So I have set this formula. If the course is start with A, तो हमारा क्या होगा, action perform होगा. If the course is not start with A, तो action perform नहीं होगा. और कोर्स पे रिकॉर्ड जब भी रिकॉर्ड्स पे कोई ऑपरेशन होगा, लेट्स से क्रिएट और एडिट, तो वो हमेशा क्राइटेरिया चेक करेगा कि जो भी रिकॉर्ड चेंज हो रहा है उसके कोर्स नेम ए से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम सिंपली सेव दिस. Once you save this, your criteria is being set. Now you can see the criteria has been set. तो ये फ्लो इस तरह से है कि स्टार्ट हुआ कोर्स ऑब्जेक्ट पे. जब रिकॉर्ड क्रिएट और एडिट होगा तब हम लोग ये क्राइटेरिया चेक करेंगे. ये क्राइटेरिया कहता है कि कोर्स नेम शुड बी स्टार्ट विथ ए. इफ दैट कोर्स इज स्टार्ट विथ ए, देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्शन. नाउ इट्स टाइम टू ऐड एन एक्शन. You can also see there is a few things added over here at the bottom of this uh, particular diamond. It represents the condition. If that condition is true, then we are going to perform some action. And if that condition is false, you can also set the second condition. If you have a multiple condition, you can set that multiple conditions in this work process builder. तो अभी हम लोग मल्टीपल के साथ में नहीं जाने वाले, इसीलिए इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन वी आर नाउ सिंपली सेट द various actions. Now to add the action, I have this add action button over here, so I'm going to click. Now there is a list of actions over here which we already mentioned in my PPT. uh, Apex, create records, and all those stuffs are there. What I'm going to do now, I'm going to choose my first option called Apex. So once I choose the Apex, you can see Apex 1, and let's try to search for a class. Now you can see you don't find anything over here because we haven't written any Apex class. Okay, तो अभी कुछ डेमो देने के लिए मैं एक छोटा सा Apex क्लास लिखता हूँ और फिर वो Apex क्लास हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे. एंड टू डू दैट, what I'm going to do, I'm going to go to my gear icon. In this gear icon, once I click,
I found the option called developer console. I'm going to open this developer console in a new tab. Let the developer console open. Now you can see a developer console is now available. These are the things which I write before that. ये आपके काम की चीज नहीं है. So I'm going to delete or remove this because अभी क्या करेंगे, छोटा सा क्लास लिखेंगे. एंड टू क्रिएट अ क्लास वी नीड टू क्लिक ऑन फाइल, click on new, and we have option called apex class. We need to define the class name over here. Let's say demo, and I'm going to click on OK. Now the demo class has been created over here with the public as a access modifier. Now what I'm going to do, I'm going to create one method over here. So let's apply annotation as in one method. Then I need to write one method over here for the all then message. And simply I'm going to print one message by using this method called system.debug. Hello, apex class around successfully. Right. So I'm done with. Okay, इधर ध्यान दो, इधर क्या हुआ. Once I write this code, I got an error in this problem. और यहाँ पे फिर क्या करना है हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैंने गलती किया है. सो इट विल शो दैट एनोटेशन इज रॉन्ग. दिस काइंड ऑफ एनोटेशन इज नॉट अवेलेबल इन द एपिक्स. तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पे. आई नीड टू चेक व्हाट्स रॉन्ग ओवर देयर. लेट मी चेंज. Let me save this. Thought I made one more mistake over here. The spelling has been wrong. Let me check for the correct method name. Basically, it is invocable हो रहा है वो. I would say invocable method. I think I have done correctly. अभी इसका spelling गलत हो गया था. Invocable. Let me search. Save this. Let me save this. Still showing some error over here. Let me save this. Let me check is there any error or not. Now you can see the program has been saved successfully. The problem has been gone from this point. Now this uh, developer console, in this developer console, we write this class. Now what I'm going to do now, I'm going to search for my class with a name called demo. I think I need to do the same thing once again. Go choose for the apex. Let's give it a name apex1 and search for the class, because we have to wait for this. इसको आना चाहिए इधर डेमो. Let me save search for the demo class.
because we right now we created this thing in my developer org. So may have a possibility it took some time to reflect over here. The thing is reflecting over here. Let me demo. Okay. What I'm going to do, I'm going to refresh this particular page. Sorry for the interruption. I don't know what's wrong with this image partner. So go here a process builder. Let it be open. The screen has been shared with you. Hello, do you hear me? Now this is my process builder. ये मैंने already यहाँ पे mention करके रखा है. We already create this workflow for this process builder. Now I need to add this action. Let's select Apex. Let it be open first. Write down the action name, that is Apex 1 this time, and search for the Apex class with a name called demo. Okay, now you can see we have a demo class over here. You just need to choose this demo class, and then finally you need to save this. ओके लेट्स मूव अहेड. नेटवर्क थोड़ा नेटवर्क का इशू नहीं, बेसिकली वाईफाई का मॉड्यूल मेरा जो है लैपटॉप का वो प्रॉब्लम दे रहा है, वो पकड़ चुक रहा था. चलो, ये डेमो क्लास मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये आई फाउंड दैट डेमो क्लास. नाउ आई नीड टू क्लिक ऑन सेव. टू सेव दिस एक्शन, just click on save. So I need to save this action over here. Now once you do that, your process builder has been ready. You can add a multiple actions over there in my immediate action. तो एक action के अलावा आप multiple actions दे सकते हो. For a time being हम लोग एक action के साथ में जाते हैं. Now once you do that, what you need to do, you need to activate this process builder, and to activate this process builder we have this activate button with us. Let's click on activate button. Let's click on activate button. Let it be activate. Hello guys, do you hear me? Kaustubh? Kaustubh, do you hear me?
What's wrong? Yeah, trying to नेट का इशू चल रहा है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है. It doesn't require that much of time. Let's click back to setup. Nothing is responding. Let's refresh this. I open this. Now you can see. Let's click on active to active this process builder. Let's confirm. Once you confirm, now you can see the process builder has been active successfully. Now what I'm going to do, I am going to back to my setup. एंड फिर इधर क्या करेंगे, इधर अभी हम लोगों को टीएमएस ओपन करना है बिकॉज वी राइट our process builder on my course object. So let's click on this app launcher and search for the TMS application. So search for the TMS application. Let's open this TMS application into my new tab. Let it be open. Okay, now go to my courses. In my courses, I have these top courses with me now. You can see I have a course with a starting or begin with the A. Course name begin with the A. तो क्या करेंगे, I am going to open this particular course and then I am going to perform some edit operation over here. And when I perform the edit operation, the criteria will make that the course begin with the A and the Apex code is going to execute. Let's edit this number of session from 108 to 110 and let's simply save this. Once you do that, the action has been performed and the event will occur. Once the event occurs, the criteria is made. Criteria is course name begin with A. And जैसे ही ये होगा वैसे हम लोग हमारा आउटपुट दे सकते हैं in a developer console. Just click on OK. Go to your logs and in your logs you can see there one log is there. इसको अगर हम लोग डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो हमारा ये लॉग शो हो जाएगा. इट रिप्रेजेंट योर प्रोग्राम हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. ओके, एंड इन माय debug only you can see the message hello apex class run successfully. So whether we execute this class, no, we haven't execute this class. We just simply make a changes in my course object and उसके अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने एक प्रोसेस बिल्डर लिखा था और वो प्रोसेस बिल्डर उसके अकॉर्डिंग टू कॉल हो चुका है. ओके, तो उसने क्या किया, एपेक्स मेथड को कॉल किया, एपेक्स क्लास को कॉल किया. इस तरह से आप अपने एपेक्स क्लास को लिख के उसको कॉल कर सकते हो ऑटोमेटिकली. राइट, नाउ लेट्स once again go to my process builder. Now what I'm going to do now, this time, I'm going to specify a few more actions in my process builder. And to do that, just go and open your process builder this time. एक ही प्रोसेस बिल्डर के अंदर आप मल्टीपल एक्शंस डिफाइन कर सकते हो. सो नो नीड टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बिल्डर एवरी टाइम. ओके, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे आपको मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करने के व्हेन द क्राइटेरिया इज मेट, देन यू कैन राइट अ सिंगल प्रोसेस बिल्डर instead of writing a multiple process builder. So you can see this is version 1 process builder. So I am going to open this now. Once this open, now you need to add the action, and when we try to perform or when we try to add the action over here, you can see this option is grayed out from here. Why it is grayed out? Because we create this process builder and we activate this process builder. Let's try to deactivate this process builder first of all. Let's check whether that option is now enabled or not.
Now the process builder has been deactivated, but you can see you haven't get that option over here to add an action. So what we are going to do now, we are not going to create a new process builder, but rather than doing that, we have a clone option over here. So what I'm going to do, I'm going to click on this clone option और इसका एक clone बना लेते हैं. Okay, so when we click on clone, it will ask me two things: whether you want a new current version of process, clone of this current version of process, or you want a new process. So I would say new version of current process. So simply यही as it is रखना है, and you need to click on save to create this clone. Now once I click on create, it is now going to create a clone for this. Now you can see this add action button now enabled. तो अब क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड एन एक्शन. तो अभी एपेक्स कोड किया था, अभी रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे. एंड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड यू सिंपली select the first option called create record, give it a name cr1. C stand for create, R stand for record, and then you need to select a record type, on which record type you need to create a record. I would say student पे हम लोग record create करेंगे. स्टूडेंट पे हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे. whenever the criteria meets on course, we create a record on a student object. Okay, it having fields. तो जो जो fields मैंडेटरी है वो fields यहाँ पे आ गई. आप उसकी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. लेट्स से कट कट and the password is Vanky at the Vanky1. Sorry, Vanky@1. This is the password. You can add a multiple fields over here by just clicking this add row button. You need to search for that field और फिर वो values आप उसके assign कर सकते हो. So अभी क्या करेंगे, rather than doing this मैंडेटरी थिंग्स तो हमने लिख लिया है. सो ज़्यादा कुछ वैल्यूज हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे. सो लेट्स से सिलेक्ट section, and I need to select the section from this pick list because section is a pick list. That's the reason यहाँ पे pick list आएगा अभी. हाँ, ये देखो है ना. So I would select the section B and I need to click on save. So whenever the criteria meets, it not only call the apex but it also update or create a record in my student object. तो इस तरह से मैं create record ये action perform कर सकता हूँ. Right. So if you go to my PPT, you can see we have covered this apex. We also covered the create record. Now let's move ahead and try to add one more action over here. So let's click on add action, and now this time I'm going to add the action called email alerts. So just select this email alerts. I say EA1 stand for email alerts. Now this time it will ask me about the email alerts. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल कोई email alerts create ही नहीं किया है, तो यहाँ पे show ही नहीं होगा. So what I'm going to do now, this time, instead of creating email alerts, I'm going to post something on my post chatter. So I'm going to select the second action or action called post chatter. Give it a name post chatter, that is PC1, that is post chatter. And you need to select किसको आपको पोस्ट करने का, यूजर को करने का, ग्रुप को करने का. आई वुड से यूजर को हम लोग पोस्ट करेंगे. एंड इट विल आस्क यू कौन से यूजर को. सर्च फॉर द यूजर एंड यू नीड टू सर्च फॉर द यूजर. आई वुड से सेकेंड. वी कैन सी द सेकेंड पोस्ट इंस्ट्रक्टर. तो अभी क्या होगा, इसके चैटर में हम लोग मैसेज पोस्ट करेंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मर्ज अ फील्ड फ्रॉम हियर. सो आई एम गोइंग टू सर्च फॉर द फील्ड.
search for the field, and I would select this course name, and I said go for this, go for this कोर्स। तो ये आपके चैटर पे जाके पोस्ट हो जाएगा, है ना, ये पोस्ट करेंगे हम चैटर पे जाके। सो वी हैव आल्सो क्रिएटेड द थर्ड एक्शन ओवर हियर, दैट इज पोस्ट चैटर। तो जो जो हो सकते हैं वो सारे के सारे चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो नहीं हो सकते उसको इसके बाद परफॉर्म करके देखेंगे। नाउ यू कैन सी we have created this record, we also created the post chatter। प्रोसेस फ्लो नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर फिर वो फ्लो आप एक्सेस कर सकते हो, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस एक्सेस कर सकते हो। तो आपको एक प्रोसेस और लिखना पड़ेगा, फिर प्रोसेस के अंदर प्रोसेस एक्शन होगा। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द क्विक एक्शन। लेट्स क्लिक ऑन क्विक एक्शन, QA1 for the quick action। Now you need to select, either you select a global action, object, or a type. So you can select any one of that. Let's select the global action, and I would say create a record, and you have your various standard object over here. So you choose, because you choose a global action, if I choose the object, then it will ask me the object, on which object you have to perform your quick action. So basically I'm going to perform a quick action on a trainer object. So you can see I have a trainer object with me. Let me search for it. Okay, I don't have that trainer object with me. So I need to select the object from here. जो यहाँ पे है, let's select the object called lead। So I'm going to select this object lead, and I'm going to specify the action over here. So let this action available over here. So I'm going to select those actions from here. Nothing is match over here। इसको टाइम लग रहा है लोड होने के लिए। It took some time। Let होप ये जल्दी से हमारा रिस्पॉन्ड करे। Right, nothing is going to be displayed over here because it is not loaded over here। तो इस ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट क्या एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा, है ना। आइदर यू वांट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, और यू वांट टू अपडेट अ फील्ड्स, और व्हाट काइंड ऑफ एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, ये यहाँ पे आपको मेंशन करने का। बट बेसिकली व्हाट हैपन, द एक्शन इज नॉट लोडेड yet relevant with my object ना, that I need to be wait for that। Either you wait, or we simply, what we are going to do, we simply फिलहाल के इसको हम कैंसिल कर देते हैं। we are going to activate this particular process builder। तो ये एक्टिवेट करते हैं, and let's see what kind of action we have defined। We are not only call the apex class, we also create a record in student, and we also post something in my post chatter। कौन से यूजर को, सेकेंड यूजर को। So go to your course object। Now the criteria met over here because the course name start with A। Now what I'm going to do, I'm going to edit this field, and I'm going to save this। Now once I save this, अभी हमको तीन एक्शंस देखने के, कौन से तीन एक्शन परफॉर्म होने वाले हैं। सो लेट द डेटा सेव इन माय Salesforce। Once the data has been saved, go to your developer console। You can see one more log is there। If I open this particular log and I click on debug only, you can see the message is displayed over here। It means the class has been executed successfully।
Similarly, what you need to do, you just click on students and check whether the student has been added or not. Now you can see student 029 Venkat Raman has been added successfully. And then finally you need to check for the PC, that is post chatter. So post chatter second user के लिए था, तो I have already logged in my second user account, right? And see, this is my second user account or third user account. Let me check by the profile. अरे load होने में बहुत time लगता है. Now this is my second host instructor second account. So I need to go to my chatter. So chatter is an functionality which is already been there. तो आप यहाँ पे देख सकते हो एपेक्स प्रोग्रामिंग गो फॉर दिस कोर्स, ये वाला हमने इसके चैटर पे पोस्ट करके रखा है ना. सो इन दैट वे यू आर सपोज टू क्रिएट और परफॉर्म अ ऑटोमेशन बाय यूजिंग अ प्रोसेस बिल्डर. अब क्या करते हैं, अभी इधर एक ईमेल अलर्ट क्रिएट करते हैं एंड इफ यू ट्राई टू ऐड एक्शन, अब ये एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. तो क्या करेंगे, यू जस्ट क्लिक ऑन बैक टू सेटअप. पहले ईमेल अलर्ट क्रिएट करना है. सो फॉर दैट आई नीड टू गो फॉर द ईमेल अलर्ट. सो सर्च फॉर द ईमेल अलर्ट. लेट्स क्लिक ऑन ईमेल अलर्ट. जैसे ही ईमेल अलर्ट पे क्लिक होगा वैसे ही ये वाला विंडो ओपन. नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू. Now, once you click on continue, you are supposed to see what are the various email alerts already been there. तो ये email alerts हमारे पास में already है. But अभी हम क्या करेंगे, हम हमारा खुद का email alert create करेंगे. And to do that, we have this new email alert button over here. Let's click on new email alert. And then I need to create, let's say, email for welcome. And I would say object. I need to select the object. Okay, so object is course object था हमारा basically. So I need to search for the course object. Then I need to choose the email template. तो ये हम लोग बाद में देखने ही वाले कि email template कैसे select करना है. So I am going to select the email template for the new customers. Then recipient, कौन सा user को हमको mail भेजने का है. So I would select the second user, इसको हम mail भेजेंगे. And then finally I need to click on save to save this email alert. Now you can see we already create the email alert over here. Now what I'm going to do, I'm also going to create one notification. Okay, so just go and click on Salesforce notification. Okay, enable app. Okay, you know, कस्टम नोटिफिकेशन पे जाएंगे. यहाँ पे हम लोग हमारा नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दिस न्यू बटन टू क्रिएट योर ओन नोटिफिकेशन. लेट्स से नोटिफिकेशन नेम इज important and the API name is automatically in there. Support, I'm going to select for both and let's click on save. So notification is also been created. Now what I'm going to do, I'm going to once again go to my process builder. So go to a process builder. तो प्रोसेस बिल्डर पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखो, नाउ यू हैव टू वर्जन्स ऑफ प्रोसेस बिल्डर. एक पहला था, उसका क्लोन बनाया तो यू गॉट द सेकंड वर्जन. तो पहले वर्जन 1 क्रिएट हुआ एंड व्हेन वी क्रिएट अ क्लोन देन वर्जन 2 क्रिएट हुआ, राइट. सो वर्जन 1 फिलहाल तो हमारे कोई काम का नहीं है. सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस एंड यू कैन परफॉर्म दिस डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम दिस बटन. यहाँ पे लिंक है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट डिलीट. इट विल आस्क मी फॉर द डिलीशन. आई विल से कंफर्म, मुझे डिलीट करने का इसको. आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द वर्जन? यस, कंफर्म. एंड द वर्जन हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली. नाउ आफ्टर दैट we have this version 2. इसको directly delete नहीं कर सकते because it is in active status. So I am going to open this
आई एम गोइंग टू डीएक्टिवेट दिस एंड फिर भी यहाँ पे एक्शन तो ऐड नहीं कर सकते, सो फिर हम करेंगे क्लोनिंग इसका एंड सिंपली सेव. Now we clone that. We already defined three actions and we saw तीनों के तीनों results हमारे पास में appear हो चुके हैं. Now click on add action. Now you just select the email alerts. Let's give a name EA1 and here you can find the email alerts. तो basically हमने email alerts क्या नाम से बनाया था? I think we need to search for that email alert from here. I can't recall if anybody have used to create email alerts. वहाँ पे मैंने जब क्रिएट किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो थोड़ा सा मुझे. नो इशू, इधर जाएंगे. लेट्स ओपन दिस सेटअप वंस अगेन. एक टैब में फिर से सेटअप ओपन कर रहे हैं हम लोग. सेटअप में जाने के बाद में यू जस्ट सर्च फॉर द ईमेल अलर्ट्स एंड यू विल गेट दैट ईमेल अलर्ट्स. अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ना लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस बिल्डर के अंदर. It requires some time. Yeah. Let meanwhile हम लोग क्या करते हैं? Let's open this. Let's search for the email alerts. Email alerts. And we have create our custom email alert. Let's continue. Then I can see we have welcome email for welcome. Okay, so this email template we have written on a course object. So what I'm going to do now, I'm going to check for the email alert, email welcome. Now you can see email for welcome. अभी आ गया है. So it required some time to load this thing and let's save this. बस हो गया है, हमने email alert दे दिया. अभी क्या होगा, वो email मेरे को received होगा once I perform some record in my course object. Okay, so but criteria should be met that that course name should be start with A. Now next I'm going to perform to send a custom notification. Let's select this custom notification. We should write custom notification, that is CN1. Let's select your notification. You can see important नाम का notification हमने बना के रखा था. You need to select the recipient, किसको हमको send करने का है. I would say user. I am going to send this. Find user करेंगे और यहाँ पे हम लोग user find करेंगे. Let's say host instructor. This is host instructor. इसको ये ईमेल जाएगा तो ये इसी पर्टिकुलर अकाउंट में मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने होस्ट इंस्ट्रक्टर सिलेक्ट किया. देन नोटिफिकेशन का टाइटल देने का है हम लोगों को. यू कैन सिलेक्ट. आई एम गोइंग टू मर्ज दिस फील्ड. ऐसे मैं एक मैसेज दे दूंगा. इसका नाम कोर्स नेम, लेट्स से एपेक्स प्रोग्रामिंग इज डिमांडिंग. तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर लूँगा. लेट्स से डिमांडिंग एंड उस नोटिफिकेशन की बॉडी भी हम लोगों को मेंशन करने का है. और
अपॉर्चुनिटी, अरे यार, अरे और जॉब अपॉर्चुनिटी than other technology, ठीक है, and I am going to save this. So you can see I have defined almost 5 actions over here. और इसमें से बचा कौन है? क्विप हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इरेलेवेंट विद द इंटीग्रेशन। फ्लोज, प्रोसेस एंड अप्रूवल प्रोसेस, ये हम लोग पहले हमको अप्रूवल बनाना पड़ेगा फिर ऐड करेंगे, पहले प्रोसेस बनाना पड़ेगा फिर ऐड करना पड़ेगा। फ्लोज हमारे हमने बनाया बट वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्शन अंडर दिस प्रोसेस बिल्डर, तो इसीलिए ये 3 चीजें हमने स्किप किए हैं। और फोर्थ वाला जो है अपडेट रिकॉर्ड्स, ये एक्सरसाइज में आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अपडेट रिकॉर्ड्स हमने वर्क फ्लो के अंदर ऑलरेडी किया था, तो सेम उसी टाइप से हम लोगों को रिकॉर्ड अपडेट्स करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक्शन नेम, रिकॉर्ड टाइप, ये सारी चीजें सिलेक्ट करके यू जस्ट नीड टू सिंपली सेव दिस, तो आप अपडेट रिकॉर्ड परफॉर्म कर सकते हो। तो ये टास्क मैं आपके लिए रखता हूँ, ये आपको खुद करके देखना है, देखने का है। सो we are good to go. We are defined 5 actions over here. Now I am going to activate this process builder. That's save. को एक्टिवेट होने देंगे। Now you can see this process has been activated. Now we have create one apex class, then create record। अब देखो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड क्रिएट करके रखा है। वी ट्राई टू क्रिएट सेम नेम रिकॉर्ड, अगर हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा के रखा है तो वहां पे उसको क्रिएट नहीं करने देगा। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, क्योंकि ये रिकॉर्ड वापस से क्रिएट होने वाला है। सो मैं इसको डिलीट कर दूंगा फॉर अ टाइम। सो लेट्स रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। Let's go to your course object. Let's open the students once again. Now I'm going to delete this. Let's select this delete option and I'm going to delete this Venkatraman from here. Let's go to your course. You have a number of courses in your course object as in records, और इसमें से हमको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? तो इसमें से हमको रिकॉर्ड चाहिए जिसका course name start हो रहा है A से। So what I'm going to open this course and let's try to edit this. Now this time I'm going to change the session. जरूरी नहीं है कि सेशन चेंज ही हो, you just simply click on edit and save rather than doing performing any updations। आप डायरेक्टली सेव करोगे तो भी वो अपडेट करके ट्रीट किया जाएगा। सो यहाँ पे हमने इधर कर दिया 108। लेट्स क्लिक ऑन सेव। Now the record has been saved successfully. Now there are 3 actions is for 5 actions are going to be performed. First one is Apex. Go to your developer console. You can see a program executed. The log has been displayed. Go to your debug only. You can see the Apex class run successfully. Message has been displayed. Second आता है record create. Go to your students and search for the Venkat Raman. You can see the Venkat Raman has been created with a different ID this time. Then the third one is PC1, that is post chatter. You go and refresh this chatter. इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास में अभी 2 पोस्ट आपको मिलेगी। नाउ दिस इज फर्स्ट पोस्ट बिफोर 14 मिनट्स ago and this is the new post which is posted just now। तो ये हमारा थर्ड एक्शन परफॉर्म हो गया। देन वी हैव ईमेल अलर्ट्स। नाउ जस्ट ओपन योर ईमेल मेल बॉक्स एंड यू कैन सी न्यू कस्टमर वेलकम वाला मेल आपको आएगा क्योंकि हमने वो टेम्पलेट उसके लिए सेट करके रखा था। सो इसको ओपन होने देंगे।
go to your inbox, and you can see you got the mail that relevant with my process. Okay, and the last one is notification. Okay, so ये notification इसी यूजर को जाने वाला है. So यहाँ पे ये बेल आइकॉन दिखेगा. It represent the notification. If you open this notification, because we already having the 20 plus notification, but at the top you can see the important notification, that is Apex programming is very demanding. And if I open this notification, अरे किधर गया, तो ये मुझे डायरेक्टली वो कोर्स पे लेके जाएगा जिस कोर्स से रिलेवेंट ये नोटिफिकेशन है. Now you can see the body of my notification that Apex programming having a more job opportunity than other technology, which we mention in my process builder, right? So with this,